हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोगों का ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अच्छा चल रहा है। ये जो वीडियो है इसमें मैं थोड़ा इक्विटी मार्केट का जो है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स जिसमें बीइंग एन इंडियन हम लोग जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं एज पर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। सो डिफरेंट डिफरेंट इक्विटी इंडिसेस को हम लोग देखेंगे। इन्वेस्टिंग इन इंडिसेस हमें राइट एसेट क्लास पे राइट टाइम पे रख सकता है विदाउट अ मेजर वोलेटिलिटी। मतलब हम लोग स्टॉक में तो जा सकते हैं बट स्टॉक ज्यादा वोलाटाइल है rather देन इक्विटी एज एन इंडेक्स। तो क्या है, जब इक्विटी मार्केट इक्विटी एज एन एसेट क्लास बुलिश है बट हम लोग स्टॉक का वोलेटिलिटी टॉलरेट नहीं कर पा रहे, विल नॉट बी एबल टू रिमेन इन्वेस्टेड व्हेन एक्चुअली द स्टॉक्स आर गोइंग अप। तो ये प्रॉब्लम के लिए देयर आर एट टाइम्स इंडिसेस इन्वेस्टिंग बढ़िया होता है। तो हमारे जो ग्लोबल पोर्टफोलियो में उसमें जरूर आई बिलीव इंडिसेस का जगह होंगे आपके पोर्टफोलियो में, बिकॉज देयर आर गुड क्वालिटी ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स अवेलेबल ऑन दीज इंडिसेस। तो चलिए चालू करते हैं कि अपना देखना, और देखने के लिए आप लोग जानते हैं मैं अपना ट्रेडिंग के लिए फाउंटेन ऑफ गोल्ड का इस्तेमाल करता हूं विच इज माय ट्रेडिंग सेटअप। और इसको बनाने के लिए मुझे इनवाइट ओनली इंडिकेटर्स में जाके अंडर एच डी रेनबो वेव वर्जन 1 और एच डी आर एस आई एक्स लगाना होगा। एंड अंडर ए वंस एक बार लगाया गया एच डी रेनबो वेव वर्जन 1, और सिंस हम लोग इंडेक्स डिस्कस कर रहे हैं, so we can either select fountain of gold which is mother setup can be applied across asset class, या तो इंडेक्स फ्यूचर स्पेसिफिकली अप्लाई कर सकते। इंडेक्स फ्यूचर अगर मैं अप्लाई करूंगा तो डायरेक्टली मुझे आने दीजिए, इसको एडजस्ट होके डायरेक्टली नीचे पैनल में दिख जाएगा से सेक्टर्स या तो डिफरेंट ग्लोबल इंडिसेस कैसा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा टेम्पलेट बनाया हुआ है इंडेक्स इंटरनेशनल, उसमें वो देखते ही आपको दिख जाएगा कि ओवरऑल यूएस का इक्विटीज में थोड़ा वीकनेस आया, स्पेशली नैस्डैक और एसएनपी 500 में। साथ में यूरोपियन वीकनेस भी आपको इमीडिएटली विजुअलाइज हो जाए। तो एक ही साथ यू कैन कीप अ ट्रैक ऑन ऑल द मेजर इंडिसेस बाय चेंजिंग टेम्पलेट्स एंड क्रिएटिंग डिफरेंट टेम्पलेट्स। तो मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप, द मदर वन, सो दैट नीचे का जो कॉल्स हैं ये भी हम लोग क्लियरली ये सिग्नल्स देख पाए। तो उसमें एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे, वी विल गो टू एसपीजीएम विच इज बेसिकली ग्लोबल स्टॉक मार्केट, पूरा जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट का ईटीएफ। सो दिस इज पूरा ग्लोबल स्टॉक मार्केट and the global stock market is going up, there is no doubt about it. So equity as an asset class बहुत ही बढ़िया शाइन कर रहा है, and this is daily chart, not say weekly, बहुत दिनों से it's quite swing, daily काफी swing है। और swing में ये ग्लोबल इक्विटीज इक्विटी एज एन एसेट क्लास बहुत ही बढ़िया कर रहा है, और हमें ये इक्विटीज में इन्वेस्टेड रहना चाहिए और मजा लेना चाहिए डिस्पाइट नोइंग दैट वी आर इन अ रिसेशनरी साइकिल। अभी तक सिग्नल मुझे नहीं मिला है, जैसे ही मुझे मिलेगा आई विल आल्सो टॉक अबाउट दैट। बट यहाँ पे दिस इज द एसपीजीएम। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग चले जाएंगे एसएनपी 500। एसएनपी 500 इक्विटी का मेन बेंचमार्क इंडेक्स है, मदर इंडेक्स है यूएस इक्विटी का एंड ग्लोबल इक्विटी का। वहां पे भी बायर सी मेजरली है, बट यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रक्चर देखिए, मोमेंटम हैज फेडेड, शॉर्ट टर्म मोमेंटम इज नाउ बियरिश, short term momentum is bearish, so it is not really a great time to jump onto equities as an entry point, not a good entry point, but equities as in general, suppose if you had invested with the signal and with the new breakouts, it's still good. Let's look at the Dow Jones. Dow Jones बेहतर किया है compared to recent times में equities, और लास्ट टाइम मेरा जो पोस्ट देखेगा आई एम आस्किंग टू गो फॉर लॉन्ग पोजीशन अराउंड दिस एरिया डाउ जोन्स, एंड उसके बाद डाउ जोन्स एज दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से इट हैज फ्लू ऑफ,
तो हम लोग का डाउ का ट्रेड बहुत ही बढ़िया जा रहा है, एंड आई विल आर्ज यू टू रिमेन इन दिस ट्रेड राइट नाउ. देयर इज whereas S&P में if you are long, it is a good time to take some money home. Short term trend short term momentum bearish हुआ है S&P 500. Now look at Nasdaq. Nasdaq का जो structure, it is way more bearish rather than बाकी दो indices. So tech index जो है वो थोड़ा suffer कर रहे हैं Nasdaq का. Not all stocks are suffering. For example, I'm into Tesla. Though Tesla is a car stock, it's not a stock. Nvidia, yeah. Actually, tech stock, some of the I'm into Intel Corporation. So Intel Corporation, looking at it has not been so well, but I'm expecting bigger run in Intel. So yeah, tech index में जरूर weakness दिख रहा है. But whereas other stocks like Equifax, Tesla, I'm into BlackRock. So these are the stocks, they have done pretty well. So ऐसा नहीं कि पूरा market वैसे bearish हो गया, but this is a general warning to avoid or be careful on the tech side of the US market. Nasdaq is clearly lost touch. The short-term trend is now neutral, and buy trade का जो buyers का ही ज़्यादा है weightage, so but buy trade का win probability has declined around 57%. Let me remove it and apply. When जब भी update आया है, always apply the latest one by removing and applying. तब जाके latest all the readings will be available correctly. Next हम लोग तो फिर क्या देखे कि global equities still up, so equities में invested रहना चाहिए. US equities have started suffering with Nasdaq significantly going down. Now we are looking at US का small cap mid cap index. Basically rotation हो रहा है from large tech cap to more towards small mid cap. This is the Russell index, US का Russell index, and Russell index का जो RSI का structure है वो देख के आप लोगों को पता चल जा रहा है, yeah, it is quite have been bullish, strong movement in the Russell index. But Russell is more volatile than the other indices. Next हम लोग चले जा रहे हैं अमेरिका के बाद एशिया में. एशियन इंडेक्स में निफ्टी आज तो हॉलीडे है. वैसे मुहर्रम जो लोग इस ऑस्पिशियस ओकेशन को सेलिब्रेट करते हैं, ऑल द माय विश to all of you, best wishes to you and your family on this special occasion. So आज उस occasion के लिए Indian market is closed, though commodity market will open up in the evening. Indian equities, CNX 500 is the broad benchmark of Indian equities, and it has been steadily moving higher. So Indian Asia में Indian equities still doing good, whereas US equities have started faltering. This is Vietnam index. We have got a sell signal, has been in a range for quite some time, nothing much. Next हम लोग देख रहे हैं Nikkei, which is Japan का index. And Nikkei में where यहाँ पे clear, just like Nasdaq, we are seeing weakness, similar sort of. So कुछ part of equities are turning sour. कुछ part sour होते जा रहे हैं. We have to be watchful of these changes, because ये अगर broad market में infect हो रहा है, this will hamper our Indian equities as well. Next we have EWY, which is basically exposure to South Korea. It has done awesome run. South Korea का बढ़िया run मिला है, but now once again it is consolidating. We have, this is Jakarta, means Indonesia में अगर आप you are interested in investing, ये है Jakarta index. But हम लोग इसमें नहीं जाएंगे. The long term trend is bearish. It is not a major index. जहां rather बढ़िया run मिला है, that is the New Zealand. New Zealand में बढ़िया run मिला है, and it is quite bullish, significantly going up. So New Zealand is where बहुत बढ़िया strong support या resistance को break हुआ, उसके बाद वही resistance का support लेके this flat line New Zealand has gone up. So bigger ride is there.
न्यू एंट्री शुड बी आफ्टर करेक्शन लाइक रेड कैप्स के बाद। सिमिलर ओशेनिया पार्ट ऑफ द जो इक्विटीज है, ये लास्ट पोर्शन में बहुत बढ़िया रन दिए हैं। Last over the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 days, of around 7, 5 to 7 days, basically, we have seen good run in Australian and New Zealand market. Whereas weakness steadily monitor किया जा रहा है Japan market, and this is China only marginal comeback. Nothing. This is a very strong resistance. China rather can go for consolidation. हांगकांग अभी तक बाई करने का कोई मेजर रीजन नहीं है हांगकांग में। इट इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू चाइना एंड लास्ट इट इज कंसोलिडेटिंग एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। सो ये लेवल का व्हाट इट डज कि इसके ऊपर सस्टेन कर पाता है, देन इट कुड बी अ गुड बाई अपॉर्चुनिटी। बट जो भी होना पड़ेगा, बिग मूव और सेल, इट हैज टू हैपन बिफोर 12th of August, बिकॉज उसके बाद दिस इज गोइंग टू बिकम अ रेजिस्टेंस। So before 12th of August, the bulls will have to break this 18,600 level. Next हम लोग आ रहे हैं सिंगापुर। सिंगापुर is not so good right now. It was at one point बढ़िया रन दिया था, but now it has turned sour. तो हम लोग सिंगापुर will not be remain invested. India, we have done awesome in terms of equity move. नाउ फाइनली हम लोग जिसको देख रहे हैं दैट इज यूरोप। यूरोप में मुझे चारों तरफ वीकनेस ही दिख रहा है। नो मेजर स्टॉक इंडेक्स विच इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग। सो ओवरऑल जो यूरोप का ब्लू चिप्स में उतना मूवमेंट नहीं दिख रहा है कि डाउन के साइड, बट इंडिविजुअली इंडिसेस अक्रॉस द इकोनॉमीज दे हैव टर्न्ड और टर्निंग सावर। ये देखिए सेल सिग्नल कितना दिनों बाद आया है ये नेदरलैंड्स के स्टॉक एक्सचेंज में। इफ यू लुक इटली टर्निंग द कॉर्नर, मतलब ये बिल बुलिश था, नाउ रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। इफ इटली ब्रेक्स हायर देन वी कैन अगेन इंडेक्स एक्सपोजर बुल, बट इट इज नाउ इन अ स्ट्रगलिंग मोड। Spain has been in a range and struggling mode for quite some time. Nothing special is happening across Spain. Individual stocks are more weakening. This is France. आने दीजिए चार्ट को। फ्रांस का जो इंडेक्स है उसका नाम है CAC 40. This is basically a CFD contract on that CAC 40. CFD मतलब contract for difference. Full form is contract for difference. Acts somewhat like a future contract. It acts like, behaves like. So UK 100, this is the UK ka index. Once again, consolidation, nothing bullish about Europe currently. Some of the indices are turning bearish, some has already been bearish or consolidating at a key level. So Europe, अगर देखा जाए, this is the European blue chip index और Euro Stoxx 50, इसमें भी weakness prominent हो रहा है, but as it is very close to an important support zone, so it will not be a wise to short करने के लिए जो ETF हमें चाहिए, EPV is an overall short on Europe. So EPV में अभी तक हमें कोई buy signal नहीं मिला है, so we can place an alert, say buy signal, rainbow buy in EPV. जब यहाँ पे buy signal आएगा, then only we'll think about going short in Europe via this exchange traded fund. And this is the Europe का सबसे बड़ा index, means Europe 600, popular सबसे बड़ा index. It is also आप देखेंगे consolidating at a key level. ये flat zone act करते हैं as a strong support or resistance. तो ऊपर की तरफ 524 and this is 510, बहुत ही tight range के अंदर ये consolidate कर रहा है। तो global equities are still bullish, but some part of the equities, वही global equities का खराब हो रहा है, especially US indices का weak होना is not a good sign, given that we are in a recessionary cycle. अभी तक हमें कोई exit नहीं मिला as per fundamental,
So we are still bullish, but these weakening of the S&P 500, Nasdaq, these are could be serve as early warnings. So थोड़ा careful रहना पड़ेगा. India is bullish. Some of the other markets along with India, we have like Japan is we have seen weakness. But if South Korea has done pretty well, New Zealand, Australia has done pretty well. तो कुछ जगह पे जरूर स्ट्रेंथ है, बट कुछ एरियाज है जहां पे वीकनेस दिख रहा है. सो ये वीकनेस हमें देखना पड़ेगा कहीं इंडियन मार्केट में स्प्रेड हो रहा है कि नहीं. बट अभी तक अगर निफ्टी 500 का चार्ट देखेंगे, सो फार इट्स लुकिंग क्वाइट बुलिश. बट यही बुलिश फेज से कहीं से करेक्शन आ जाता है. दिस वीकनेस इन द ग्लोबल इक्विटी मार्केट इज एन अर्ली साइन टू बी केयरफुल, especially when short-term momentum remaining as bearish. So that's all, friends. Thank you so much for watching this global equity market discussion. I hope this was helpful to you. All the best from my side, and as always, happy trading.